So today we will start graph, which is based on JEE Mains and JEE Advanced. So first we will start with introduction of graph. तो हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या है ये सब सारी चीजें देखेंगे। जैसे फंक्शन है हमारा, फंक्शन फंक्शन ग्राफ में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक, एक होता है ट्रांसीडेंटल। एक होता है एल्जेब्रिक, एक होता है ट्रांसीडेंटल। और एल्जेब्रिक में कितने कितने प्रकार का होता है। एल्जेब्रिक में होता है पॉलिनोमियल, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल, एक होता है पीसवाइज। और पीसवाइज में भी होता है, जैसे मॉड्यूल हो गया, सिग्नम हो गया, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो गया, फिर से फंडामेंटल पार्ट फंक्शन हो गया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, वेरियस टाइप। ये सारी जितनी चीजें, पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे हम लोग, रेशनल के ग्राफ देखेंगे, इरेशनल का ग्राफ देखेंगे, फिर से पीसवाइज फंक्शन के ग्राफ देखेंगे, फिर ट्रांसीडेंटल में आएंगे। ट्रांसीडेंटल में कितने कितने प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया हमारा अपना ट्रिग्नोमेट्री, एक तो हो गया एक्सपोनेंशियल, एक हो गया लॉगरिथमिक जी, और इसको हम बोलते हैं इनवर्स एक्सपोनेंशियल और इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। उसके बाद हो गया ज्योमेट्रिकल कर्व हो गया, ज्योमेट्रिकल कर्व का एक और है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्रिक कर्व, एक हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ पॉलिनोमियल। पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर रेशनल पाएंगे, फिर इरेशनल पाएंगे, फिर पीस वाइज पाएंगे। आफ्टर दैट हम ट्रांसीडेंटल में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पे, एक्सपोनेंशियल पे, लॉगरिथमिक, और इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। ओके, आफ्टर दैट दिस विल, जो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉलिनोमियल पे। As we know that equation of polynomial is f of x is equal to a naught plus a1 x plus a2 x square plus like this x to the power n। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसमें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आफ्टर दैट ये a naught, फिर से a1 a2 फिर an तक ये बिलोंग करेगा रेशनल नंबर। तो हम बोलेंगे इसको देन f is called a polynomial function, और इसको बोल देंगे f of x is also called polynomial in x। पॉलिनोमियल इन f of x मीन्स f तो हमारा हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, और जब f of x आ गया तो पॉलिनोमियल इन x बोलेंगे। पॉलिनोमियल इन जैसे हम बोलते हैं ना g ऐसे g of f, आफ्टर दैट ऐसे ही हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x मीन्स f of x। ग्राफ देखेंगे अब इसमें पॉलिनोमियल में सम बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें देखेंगे सम बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ग्राफ ऑफ f of x स्क्वायर हो गया, उसके बाद हमारा f of x का x क्यूब हो गया, फिर से f of x का, आफ्टर दैट मतलब देखेंगे, अभी देखते हैं। पहले नंबर पे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब तो पता है हमको, आइडेंटिटी मतलब एक होता है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी मतलब क्या, जिसका द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जितने सारे हमारे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम बोलेंगे इसको कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब देख, एफ यू एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो देख सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। एंड दिस एंगल बिलोंग्स टू 45 डिग्री, ऐसे 45 डिग्री। आप अगर ऐसे बना दें तो इसमें भी 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ का एंगल जब किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो कितना होता है, 45 डिग्री। देखते हैं उसके बाद हियर y is equal to x clearly represent the straight line passing through the origin। देखो सपोज हम y ओरिजिन पे क्यों पास कर रहा, सपोज y is equal to x है, तो if we will take y is equal to x then automatically x will also 0। मतलब x के वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो ओरिजिन से तो पास होगा ना। एक तो पॉइंट पता चल गया हमें। सपोज y इज इक्वल टू 1 ले लिए तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आएगा। सपोज y इज इक्वल टू 2 ले लिए तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 आएगा। y इज बिकॉज बोथ आर इक्वल देन वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y विल बी सेम, देन इट विल बी, सपोज ये ले लिए 0 0, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 1, कहाँ आएगा, सपोज 1 1, 2 2 कहाँ पे आएगा, ऐसे। लाइक 3 3 कहाँ पे आएगा, ऐसे। 4 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे कितना आएगा डिग्री, 45 डिग्री। इट विल बी 45 डिग्री थ्रू सपोज नेक्स्ट, suppose passing through the origin and include the angle 45 degree, it एक पॉइंट लिख लो, it include the angle 45 degree, always angle will be 45 degree in identity function graph। Okay, graph of f, so if anybody will ask that what is graph of what is angle of x is equal to y, then you will say that angle of x and y is 45 degree along x axis or y axis or in along x axis y axis, like this we will say। नेक्स्ट चलेंगे दूसरे नंबर पे, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सपोज यहाँ पे ले लिए हम वैल्यू कोई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, along एक्स एक्सिस क्या होगा। तो हम देखेंगे, फर्स्ट विल राइट टू वन शॉर्ट नोट, a function given by f of x is equal to x square is called square graph और स्क्वायर फंक्शन। यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन होगा हमेशा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो हमेशा स्क्वायर फंक्शन बनेगा। देखेंगे ग्राफ के थ्रू कैसे होगा और इसका डोमेन क्या होगा। इस ग्राफ का वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है उसका डोमेन क्या होगा, द डोमेन ऑफ स्क्वायर फंक्शन इज आर। डोमेन क्या होगा, आर होगा, एंड इट्स रेंज। अब रेंज क्या होगा, रेंज होगा आर पॉजिटिव यूनियन सिंगलटन स्ट्रेस। यहाँ पे आर पॉजिटिव यूनियन
सिंगल जीरो मतलब it will include zero, it will include zero, and rest one is r positive. Okay, it will include zero. It will union means what? It will include, it will add, it will like this. And it is also known as and. देखते हैं y is equal to x square का ग्राफ क्या होगा along x axis. उसके बाद y is equal to x square. अब ये वाला along x axis है ना, along y axis का क्या होगा? y is equal to suppose sorry, x is equal to y square along x axis. ओरिजिन से चुके जाएगा, ओरिजिन से ये इट विल ऑलवेज टच ओरिजिन. बताते हैं क्यों टच करेगा ओरिजिन को. सपोज दिस ग्राफ ऑफ x is equal to y square. Suppose we will take a value of y is equal to 0, then automatically x will be 0. Then what will happen? It will always touch origin. The one point will be 0 0. It will always touch, same like this only. Y is equal to 0, then x is also equal to 0. Then it will also touch origin. It will also touch origin. Suppose to take the another value. Suppose y is equal to 1. Then x square. X square means what? X square. X value will be also 1. Suppose you will keep here, then it will be plus minus 1. It will be there. Plus minus 1. Then one value will be suppose here, and another value will be here. One value will be here 1 1. Here it will be minus 1 1, like this. Suppose here plus minus x is equal to 1 and minus 1 both, and y is equal to 1. Then y is equal to 1 we have seen here. Y is equal to always 1. अब देखते हैं इसमें खासियत क्या है इसका, मतलब देखते हैं कि एक पॉइंट आ रहा है नेगेटिव में, एक पॉइंट आ रहा है पॉजिटिव में. देन देखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली. सपोज x y is equal to x square is a parabola. ऐसे तो पता है हमें parabola होगा, parabola ग्राफ parabola का है. उसके बाद देखेंगे since y is equal to x square is an even function, so its graph is symmetrical about y axis. This graph will always symmetrical. Suppose symmetrical तो क्या, वही तो यहाँ पे देखते हैं, यही है ना. 1 1 1. Suppose this here it will be 2, 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 2 2 like this. This is symmetric. Suppose the value of here is suppose the value of here y is equal to, यहाँ पे लिखते हैं, so y here in this graph y is equal to 1. Here also y is equal to 1. If you take value here, so, value of y and here value of y will be same. Here value, suppose y1, y2 like this, y3, y4 like this. Then y1 is equal to y2, y1 is equal to y2, y3 is equal to y4, y3 is equal to y4 like this. Then it is saying that it is symmetric about x-axis, means the value of both value of x is same, then value of here x is same, then we will say that it is symmetric along x-axis, because value of both side of x is, because here we will see that the value here is x, the value of x is same for this also and same for this also. Then we will say that the value of the graph is symmetric about y axis always. अब देखेंगे ये वाला. सपोज एक तो ग्राफ ये वाला बना लिया, उसके बाद देखेंगे ग्राफ ऑफ f of x is equal to x to the power 2n. ये ऑड है. सपोज हियर y is equal to x square ऑड है, फिर y is equal to x to the power 4 है, y is equal to x to the power क्या है सब 6 है, y is equal to x to the power 8 है, y is equal to x to the power 10 है. Likewise, then we will what we will write here, then y is equal to x to the power, it will suppose हम इसको ऑड में इवन में रखना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n को, तभी तो इवन होगा. सपोज we will put here 1 and n belongs to natural number. Always n belongs to, suppose here we will put n 1 2 3 4 like this. Then we will put here value 1 x square. After that we will put 2, then x to the power 4. After that we will put 3, then x to the power 6 like this. So it will go. Then we will see the f of x is equal to x to the power 2n, x to the power 2n, and n belongs to natural number. Then हमने क्या देखा था, y graph of x square like this. It is going graph of y is equal to x to the power 4. Then graph will go like this.
from here. It will start from here. It will start from here like this, like this. It will go like this. Same like this, all graph will go like this one. Suppose here, this is x square, this is x to the power 4, and this is, it will smooth. This graph will smooth. X to the power 6 like this. It will go here x to the power 6, x to the power 4, x to the power. This x square is always greater than this x to the power 2n, and n belongs to infinity. So it will always greater than, x square will always greater. So here what we have seen that if n belongs to natural number, then function f given by f of x is equal to x to the power 2n is an even function. अगर इवन होगा तभी ऐसे ग्राफ बनेगा, अगर ऑड हो गया तो फिर ये वाला टिल्ट करके नेगेटिव में आ जाएगा. ऑलवेज इट विल कम, वन विल कम पॉजिटिव, वन विल कम नेगेटिव. हमेशा पॉजिटिव में रहेगा ये वाला ग्राफ. f of x is equal to x to the power 2n हमेशा. so x square is तो ले लो, x square will always positive like this, and this graph x square will always greater than x to the power 4, it will always greater than x to the power 6, this will always greater than x to the power 8, this will always greater than x to the power 10. Likewise it will always greater, this graph will always greater than x to the power 2n, and where n belongs to natural number. अब देखते हैं ग्राफ ऑड फंक्शन का. ऑड फंक्शन का मैंने सॉल्व एफ 4 था ना. ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3. अब एक्स टू द पावर 3 के ग्राफ देखेंगे हम. ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर मींस y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 ग्राफ देखेंगे. फर्स्ट वी विल राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस. अ फंक्शन given by f of x is equal to x cube is called the cube function. उसमें क्या था, स्क्वायर फंक्शन था, इसमें क्या है, क्यूब फंक्शन है. क्यूब फंक्शन. अब देखेंगे इसका डोमेन और रेंज क्या हुआ. the domain and range of cube are both equal to r. इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन एंड डोमेन ऑन रेंज क्या होगा, इट विल ऑलवेज बिलोंग्स टू आर. डोमेन ऑन रेंज हमेशा आर होगा इसका. और सपोज ये हम पता है एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, देन व्हाट विल सिंस y is equal to x cube is an odd function. so odd function है तो क्या होगा, its graph is symmetrical about opposite side और opposite quadrant. अब ये देखेंगे कैसे symmetrical है opposite quadrant. जैसे हम देखेंगे ये कैसे हुआ symmetric, और ये हम देखेंगे कैसे symmetric हुआ opposite quadrant में. we will start with next page. now इसमें origin लिखता है और from origin, since origin. no I think so we will see the graph of f of x square. f of x is equal to x cube. we have seen x square graph, and this we will see x cube graph. तो x cube graph कैसे बनता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे origin को टच करके नीचे से लाएंगे. यहाँ पे x cube का ग्राफ है, y is equal to x cube का ग्राफ. अब इसमें देखेंगे origin को टच करेगा, it will always touch origin. पिछले पेज पे देखे थे, it will always touch origin. then suppose here y is equal to 0, then x will also 0. when we will put the value of y, it will, after that we will see that value of x will always 0, then it will be 0 0. next suppose how it is symmetric about positive quadrants. suppose this first and this is third quadrant, it is symmetric about about opposite quadrant. we have seen that we will see that how why it is symmetric about opposite quadrant. opposite quadrant में symmetric क्यों है, ये हम चलो देखते हैं. तो यहाँ पे suppose value of x is equal to क्या लिए, suppose value of x is equal to 1,
then the value of y will also, value of x will also 1, then it is 1 1. But when we will take the value of y here, suppose we will take the value of x is equal to -1. Suppose we will take the value of y is -1, then -1, then value of it is odd, then it will, again it will be -1. Then just opposite, here is 1 1 and here is -1 1, same one. Suppose we know that the x and y both are negative, and in this x and y both are always positive. Okay, then we will see, after solving this line will always negative to this line. This line is all, both are same but just negative to other, both are same but just negative to other. ये वाला और ये वाला दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये वाला नेगेटिव आएगा, ये वाला पॉजिटिव आएगा। इसी के चलते हम बोलते हैं इट इज symmetrical about opposite quadrant. It is symmetrical about opposite quadrant, but it is here it will be 0 0. It will be 0 0. It will be not symmetric. Here it will be not symmetrical. 0 0. Next we will see the graph of f of x is equal to x to the power 2n minus 1. 2n minus 1 ये odd के लिए है. This is for odd. So if n belongs to natural number, then the function f is given by f of x is equal to x to the power 2n. ये x to the power 2n क्यों लिखते हैं हम, और अभी बता रहे हैं आपको. And is an odd function. So its graph is symmetric. हम पीछे इसमें देखे हम symmetric क्यों होता है ये, तो इसी में वही यह symmetrical about origin or opposite quadrant. origin पे भी symmetric होता है और opposite quadrant में भी symmetric होता है. 0 0 it will not affect your answer. So we will start plotting graph. First, before start plotting graph, we will just write why we write this. Suppose f of x is equal to x cube. Why we write this? Suppose here is x cube, x to the power suppose here when we will put here 7, and x to the power 7. After that we will write 9, x to the power 11, x to the power 15. Likewise we will write all 13, x to the power 15. Like this we will write here. Here it will be x cube, x to the power 5 is also. Suppose here we will put here 1. F of x is equal to 1, then it will be 2n minus 1. It will be 2, put the value, then it will become x. F of 2 we will put, then 2 x to the power 3. It will be, suppose f of 3 we will put 3 to the 6 minus 1, x to the power 5. Likewise when we will put 4, then it will be 7. Sorry, it will be 7. Likewise it will be x to the power 2n minus 1. F of n is equal to x 2n minus 1. F of n is equal to x 2n minus 1. We will write like this. Now we will plot the graph of f of x is equal to x to the power 2n minus 1, x cube, x to the power 5, x to the power 7, x to the power 9. Likewise, odd function. N belongs to natural number. Now
f of n is equal to x to the power 2n minus 1, and n belongs to natural number. After putting the value of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 like this natural number, we will get x to the power x cube, x to the power 5, x to the power 7, x to the power 9. After that, we will plot the graph of here, and we will plot the graph of x cube. After that, we will plot the graph of x to the power 5. Here it will be x to the power 5 like this. It will go smoothly. It will go like this. It will go, and if we know that here it will be x, the value of x, y is equal to x. Y is equal to x. This is the graph of y is equal to x. Then we have seen that here x is smaller than x cube. This is smaller than x cube, and x cube is smaller than x to the power 5, and it is also smaller than x to the power 7. Likewise, it is smaller than when x belongs to 1 to infinity. Suppose when x belongs to 0, 1, then what will happen? Then in this condition, x will greater than x cube, and x to the power 5 is greater than y. Suppose it will in domain this 0 to 1. Here we will see that x is always greater than x to the power 5, and x to the power 5 always greater than x is always greater than x to the power 3. X cube is greater than x to the power 5. Likewise, it will in domain 0 to 1. Suppose in domain x belongs to minus infinity to minus 1. What will happen? In this, x is also greater than x cube, and it is greater than x to the power 5. Same domain. Here it will see that in suppose domain minus 1. Here minus 1 to infinity, minus infinity. Here you will see that that x is greater than x to the power 3. Here x is always greater than x to the power 3, and here x cube is greater than this x to the power 5, and x to the power 5 is greater than 7. Likewise, it will same here also in this domain. This domain this, and in this domain this. अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रेशनल फंक्शन. तो अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो फ्रेंड आपके पढ़ रहे हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें. थैंक यू. अभी के लिए टेक केयर. बाय बाय.